Hello, hi guys. Very warm welcome to today's session and good afternoon to everyone present. Hi, Yuraj. How are you? Hello, hi, Vimal. Hello, how are you guys doing? Hi, Lucky, Naman, Good Laksha. afternoon, sir. Very good afternoon, guys. Cool. So, I think good afternoon, Ritik. Cool. So, before we get started, let's get to know each other. Okay. So my name is Gladden, but I would want you guys to know more than just my name. So I'll give a brief introduction about myself. But before that, can I check the diversity of the attendees that we have? So you guys can tell me which city are you guys from? UP. Awesome, awesome. Delhi, wonderful. Hi, Ritik. Lucknow, Jodhpur, Rajasthan. Awesome. So we have people from all over the country, which is quite exciting. ठीक है? Karnataka, nice. Bihar, Maharashtra, wonderful, cool, awesome. I'll also tell you guys a bit about myself. Panipat, Haryana. Awesome. So my name is Gladden, and I am a staff AI engineer and a lead instructor, currently working with Upgrad School of Technology. So over the years, I have been involved in building software, building voice AI agents, building AI products, and have seen the complete software development life cycle. Over the years, I've also trained more than 12,000 students across various technologies, have taken a lot of workshops, have taught with other organizations, including PW, Newton School, Coding Ninjas, right? And I think one thing that I really understood about myself is I genuinely love teaching students, right? And since I am a techie myself, teaching about technology, teaching about AI, teaching about programming. That is something that I enjoy the most. And in today's session, though the title is called Computing Orientation, we are going to discuss about something very interesting, right? So it would not be right to ask how many of you use internet because all of us use the internet for almost every other thing that we do, right? Whether it is um, communication, whether it is entertainment, whether it is education, हम हर एक चीज के लिए इंटरनेट यूज करते हैं, right? But very few students or very few people know how the internet works, right? So we are going to kind of demystify the whole concept of internet कैसे चलता है, what is the role of data center, what is the role of servers, what is the role of your router, how is data being able to reach from some data center in the US to your phone, right? Within milliseconds. तो हम कंप्लीट इंटरनेट इकोसिस्टम को ब्रेक डाउन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली इंटरनेट काम किस तरीके से करता है, right? And I have made, yes, Yuvraj, you're right, but we are going to go a little bit deeper into that. And I'm going to share my screen. So I have made a small animation video for all of you guys. So I'm going to use that animation to explain this. So let me start with. So there is a small video that I have, right? Now all of us we use YouTube, Google Drive, correct? And let's say I'm watching a video from my Google Drive. ठीक है, मेरे Google Drive में एक वीडियो है and I can play it, right? बट इट इज लोकेटेड क्योंकि वो गूगल ड्राइव है तो गूगल की किसी सर्वर पे लोकेटेड होगा. तो लेट्स से दैट वीडियो इज प्रेजेंट इन सम सर्वर इन द यूएसए. हाउ डज इट रीच मी? हमारे फोन तक वो वीडियो पहुंच कैसे रहा है? बिकॉज physically if I speak, so that video is not located in your phone. You are still able to play it on your phone.
How does this work? How does this work? Anyone? How does this work? जो वीडियो यूएस के सर्वर पे लोकेटेड है वो आपके फोन में कैसे चल पा रही है? Sir, through Yes, electromagnetic के waves, through. okay. Cloud storage, okay. Optical fiber cables, okay. So we are going to discuss this in detail, okay. ठीक है. But I'll start, okay. So uh, most of the apps you are using, right? All of them are using the internet, right? And all of them are dependent on a lot of data that is not stored locally. So ideally, this has to be transmitted from the source to your destination, which is basically your phone, right? Now, firstly, you need to understand about data centers. तो कितने लोगों को पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर लार्ज फार्म्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स जो बड़े बड़े फिजिकल जोग्राफिकल स्पेसेस में लोकेटेड होते हैं एंड इवन दो वी कॉल इट क्लाउड राइट हम उसको बोलने के लिए क्लाउड बोलते हैं बट a lot of people feel that it is somewhat in the air. It is not in the air, right? Every file that you're accessing on the internet has a physical storage, राइट जस्ट लाइक आपके फोन का फिजिकल स्टोरेज है उसमें कुछ फाइल स्टोर है तो इंटरनेट पे कोई भी फाइल जो आप एक्सेस करते हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकली स्टोर्ड है उसको आप क्लाउड भी अगर बोल रहे हो इवन इफ यू आर कॉलिंग इट क्लाउड दैट जस्ट मीन्स दैट देयर इज अ रिमोट सर्वर तो आप यहां से एक्सेस करें तो यूएसए के सर्वर पे लोकेटेड है राइट बट देयर इज अ क्लाउड farms right so let's for now just search for data centers right and there are huge data centers like this, right? And आपने सुना होगा, they need a lot of water, a lot of processing, a lot of compute to function. And many large companies have such huge data centers. और इसके बिना the internet is not complete, right? So maybe the YouTube video that you watch today is coming from a server that is located on some data center like this, correct? So we'll go and try to understand in depth how that actually works, right? Now these particular data centers, of course, have multiple servers जहां से data flow हो रहा है वो आपके आप तक पहुंच रहा है, right? Now, how many of you feel that we could use the satellite for transmission of this data? कि हमारे पास फोन है तो ये डेटा ट्रांसमिट हो सकता है सैटेलाइट के थ्रू एंड through the server to the satellite and back to us. How many of you feel this is a feasible solution and we could actually do something like this? Yes, can we do this? Yeah, this is a feasible solution. Yes, 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 yes. Okay. So then, do you guys also think that this is how we are using internet today? Do you feel this is how we are using the internet as of today? जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं क्या वो इस तरीके से काम कर रहे हैं? No, it does not work like this. It does not work like this. Correct? Someone mentioned about Starlink. So yes, Starlink is based on this philosophy of using the satellite as an interface to to facilitate the entire internet, correct? But जो internet आज 99% of जनता यूज कर रही है that is not based on this principle. अच्छा, why are we not using the satellite? Why? There are people who are trying to do it, and again, as someone mentioned, Starlink है costly. Okay, someone mentioned costly. Okay, okay, cost. ठीक है. Anyone wants to guess what is the distance from, let's say, the Earth um, to a satellite? ये distance कितना होता है? High traffic, okay. Latency, delay, correct. ये कितना distance होता है? कितना distance होता है? Search करके बताओ कितना distance होता है? From the Earth to a satellite, if I have to do this, 300 kilometers. Naman, 300 kilometers is from Mumbai to Pune. Huh? 300 kilometers. It cannot be 300 kilometers. सैटेलाइट की बात कर रहे हो सिटी एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं जाना है हमें करेक्ट thousands of kilometers 64,000 40,000 something like that yes thousands of kilometers
तो 50-60 हजार किलोमीटर, 40 हजार किलोमीटर, राइट? दैट इज अ लॉट, राइट? कैन वी ऑल्सो से जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो इफ आई टेक 22,000 माइल्स फॉर एग्जाम्पल इन दिस रिप्रेजेंटेशन, माइल्स कैन बी कन्वर्टेड टू किलोमीटर्स। बट ये जो 22,000 माइल्स है, जो भी आपको एग्जाम्पल लेना, 35,000 किलोमीटर है, राइट? तो 35,000 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, करेक्ट? एंड देन आई मीन इफ आई कंपेयर कि यूएस से इंडिया, अगर फिजिकल जोग्राफिकल लैंड डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है वर्सेस इफ इट हैज टू कम थ्रू द सैटेलाइट, विच वन इज क्लोजर? विच वन इज क्लोजर? ज्यादा पास कौन सा होगा? अगर मैं लैंड के थ्रू कनेक्ट करूं वर्सेस मैं सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करूं, विच वुड बी क्लोजर? डेफिनेटली वाया लैंड, राइट? एंड सिग्निफिकेंटली, ऐसा नहीं है कि वो 2x 3x का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, राइट? यस, इट इज लाइक 5,000 एंड 50,000 का डिफरेंस, 10x एटलीस्ट डिफरेंस आएगा आपको, राइट? बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर यूजिंग द सैटेलाइट, व्हेन यू आर यूजिंग द सैटेलाइट, the distance doubles, right? Distance double हो जा रहा है, right? So it's not 22,000 miles. It is 22,000 plus 22,000, right? From the data center to the satellite, and from the satellite to your phone, that is 2x the distance, correct? Data has to flow up and then has to come from the satellite back to your phone, right? तो 2x डिस्टेंस हो गया, राइट? सो ये 22,000 माइल्स भी नहीं बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा 44,000 माइल्स, राइट? 44,000 माइल्स कंपेयर टू, और किलोमीटर्स में बोलोगे 60-70 हजार किलोमीटर, जो भी होगा, कंपेयर टू अगर मैं लैंड का डिस्टेंस देखूं तो इट विल बी लेस देन 10,000 किलोमीटर और समथिंग अराउंड दैट, राइट? तो लैंड का डिस्टेंस इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर, एंड डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा लेटेंसी उतनी ज्यादा होगी, विच मीन्स इट विल कॉज डिले, राइट? सो थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग स्लोअर, राइट? जो फाइल्स आपके पास आ रही है, द टाइम विल इंक्रीज एंड स्लो हो जाएंगी चीजें, लेटेंसी बढ़ जाएगी, राइट? यस. So because of that, we will not we don't use satellite for the internet. Rather, we use cables. ठीक है? तो सैटेलाइट वाला अभी कॉन्सेप्ट बाहर निकाल देते हैं, because that is not how the internet works as of today. So satellite is out of the picture. तो अगर सैटेलाइट हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, फिजिबल ऑप्शन नहीं है, because of the latency, delay and long distance, then फॉरेस्ट में यूज कर सकते हैं. यस अंकित, दैट इज द एडवांटेज वी हैव, राइट? दैट इज द एडवांटेज वी हैव. बट व्हाट आई एम सेइंग कि प्रैक्टिकली कैसे होता है, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता है, राइट? प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता है, राइट? इट इज, आई डेंट आस्क वेदर इट इज पॉसिबल, आई एम सेइंग प्रैक्टिकली एज ऑफ टुडे हम क्या यूज करते हैं, right? It is possible. We can use the satellite. I already told you we can use the satellite, but we don't use it because of latency, right? But however, in जैसे rural areas हो गए, forests हो गए, जहाँ पे cellular towers नहीं है, वहाँ पे definitely satellite is an option, and that is what Starlink is trying to solve, right? कि internet is not restricted to particular areas. Any corner of the planet, you will be able to access the internet अगर आप satellite को use कर रहे हो, right? So that is the next stage. But for now, we are not using it, right? We are not using it. And as of today, what are we using? हम क्या यूज कर रहे हैं आज की डेट में? How are we? What are we doing as of today? Cables, correct. We are using cables. So जो हमें इंटरनेट फैंसी साउंड करता है in our head, something that is very fancy is actually nothing but a network of cables. Is just a network of cables. So आप बोलोगे कि सर, are you saying that the whole internet is just a network of interconnected cables, optical fiber cables to be precise? Yes, yes. So then the question is, सर ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल साउंड कर रहा है, इतने केबल्स किसने कनेक्ट कर दिए फ्रॉम एवरी कंट्री टू एवरी कंट्री? सी, इंटरनेट इज कनेक्टेड थ्रू आउट द होल वर्ल्ड, विच मीन्स हर कंट्री से दूसरे कंट्री देयर शुड बी अ कनेक्शन. The whole network should be connected, right? So who is doing this? Is there a singular owner of all of these cables? Not necessary, right? And how do you see what is the how does the cable network look like? This is a website which you can use. It's called submarinecablemap.com, and you will be able to get a good view of the whole, you can say, all the different continents and all the different countries that we have, वो कैसे connected है, उसका आपको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा, right? And now if you zoom,
you will see that each color represents one cable, right? So there is one cable. एंड मैं इसको सर्च भी कर सकता हूँ, राइट? सो आई कैन सर्च, तो लेट सर्च समथिंग लाइक किसी के केबल के नाम में इंडिया होगा, यस, इंडिया एशिया एक्सप्रेस. So I selected one particular cable, right? Now this one particular cable that I've selected, ये जो आपको दिख रही है, this connects Mumbai, this connects Maldives, this connects Sri Lanka, this connects Malaysia and Singapore, right? तो इतनी सी एक ही केबल है. दिस इज वन केबल, राइट, दैट इज कनेक्टिंग मल्टीपल पॉइंट्स. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? तो देर आर more cables. Network ऐसे ही तो बनता है, right? I can have a connection from A to B and there can be a different connection from B to C. Acha, how many of you have traveled in metros? How many of you have traveled in metros? शुभम वायरलेस यस, बट केबल फिर भी आपके घर तक आई है ना शुभम? शुभम, आपने राउटर लगाया होगा ना, केबल आपके घर तक आई होगी, राइट? एंड देन वहां से क्लोज डिस्टेंस बस वायरलेस है, बट आपके घर तक केबल पहुंची है ना, वही केबल, दैट दैट इज अ पार्ट ऑफ द केबल नेटवर्क. ओके, ठीक है. अच्छा, ऑल ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड थ्रू मेट्रो. तो आपने अगर मेट्रो का कभी मैप देखा हो, जनरली देर आर डिफरेंट लाइंस. तो एक ऑरेंज लाइन होती है, एक ब्लू लाइन होती है, एक पिंक लाइन होती है. हैव यू नोटिस दैट? बिकॉज एवरी लाइन, राइट, मेट्रो में वन लाइन, लेट्स से येलो लाइन, राइट, मेट्रो के नेटवर्क में आपने देखा होगा. यस, सो एक लाइन एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाती है, राइट? सो एनी डेस्टिनेशन दैट इज इन दिस पाथ वो कवर करेगा वो पर्टिकुलर येलो लाइन. बट व्हाट इफ मुझे ऐसे नहीं जाना है, मुझे ऐसे जाना है? सो देयर माइट बी an orange line and a pink line and there are multiple lines, and when you connect all of these lines, आप कहीं से भी कहीं जा सकते हो, right? Because I can use the yellow line, then switch, then use the orange line, then switch, then use the pink line, right? Just think of it like that. बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केबल्स है, एंड व्हेन दे ऑल गेट कनेक्टेड टुगेदर वी हैव एक्सेस टू द इंटरनेट दैट वी हैव, राइट? ऑल ऑफ दिस इंटरनेट cables. And then when you click on any of these cables, right, जब आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि who is the owner of that cable as well, right? So when you click, you will get a view. So for example, जो हमने पहली केबल देखी थी, इंडिया एक्सप्रेस, right? So you will see what is the length of this cable. So this is 5,791 kilometers long. And who are the owners of this cable network, right? China Mobile and Reliance Jio, right? They are the owners of this particular cable. And iske landing points, Chennai, Mumbai, and so on, right? Thailand. So these are all the landing points of these cables, right? And now multiple such companies might own different cable networks, and when you put all of that together, हमारा इंटरनेट बन जाता है, राइट? सो फर्स्ट रियलिटी चेक फॉर ऑल ऑफ अस is that internet is powered by multiple such optical fiber cables. Internet is powered by all of these different optical fiber cables. So it is not magic. It is not magic if something is happening in the air, right? Actually, it is not happening in the air. It is happening under the ground because all of these cables are actually mapped under the ocean, which we are going to see shortly. ठीक है, तो हमें इतना तो पता चल गया है कि बहुत सारे केबल नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, एंड ऑल ऑफ दोस केबल्स इधर आर कनेक्टेड थ्रू दिस टावर्स और थ्रू योर राउटर टू रीच यू. ठीक है. नाउ एनी पर्टिकुलर फाइल दैट इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द सर्वर्स इनसाइड अ सेंटर, इनसाइड अ डेटा सेंटर. तो डेटा सेंटर में सर्वर्स होते हैं, राइट? और एक सर्वर के अंदर होगी आपके पास एक सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसे आपके कंप्यूटर में होगी एक एसएसडी, या फिर इफ यू आर यूजिंग एन ओल्डर कंप्यूटर एंड ओल्डर लैपटॉप तो उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकती है, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हार्ड डिस्क ड्राइव एंड अ सॉलिड स्टेट ड्राइव? हैव यू हर्ड ऑफ एसएसडी एंड एचडीडी? यस, it has nothing to do with Intel Core, right? I can use um, anyone knows the difference between SSD? Typically speed, right? Speed, a storage device, again, a storage device, solid state drive. But SSDs have better speed. आप फाइल कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, whatever, right? Speed is better in case of an SSD. So जैसी आपकी स्टोरेज
ड्राइव है आपके लैपटॉप में, वैसे ही एक एसएसडी है एक सर्वर में जहां पे आपका फाइल लोकेटेड है। ठीक है। सो अ स्मॉल सर्वर वेयर योर फाइल इज एक्चुअली लोकेटेड, राइट। नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट इज, जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब मैं इंटरनेट यूज करता हूँ, तो वो फाइल मेरे तक पहुंचती कैसी है? दैट इज द क्वेश्चन, राइट। हाउ डज दैट फाइल रीच फ्रॉम अ सर्वर टू, लेट्स से मेरे घर पे मैं राउटर यूज कर रहा हूँ, या फिर एक इथरनेट केबल यूज कर रहा हूँ, या फिर मोबाइल डेटा यूज कर रहा हूँ, राइट। सो हाउ डज इट रीच? ठीक है। सो फॉर दिस लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हाउ डज अ लेटर रीच यू। जो कंप्लीट पोस्ट नेटवर्क है, जो हमारा कंप्लीट पोस्ट नेटवर्क है, जिसमें हम लेटर्स भेजते हैं एक दूसरे को, राइट, लेटर्स भेजते हैं, वो लेटर आपके घर तक कैसे पहुंचता है? उस द पोस्टमैन, हाउ डज द पोस्टमैन नो कि ये लेटर मुझे इसी घर में देना है? हाउ डज द पोस्टमैन नो इन विच हाउस डू आई हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर लेटर? कैसे पता चलता है, बताओ? कैसे पता चलता है? एड्रेस। एड्रेस। विदाउट एड्रेस यू वुड नॉट नो कि ये पर्टिकुलर लेटर, ये पर्टिकुलर मेल बॉक्स किसके यहाँ पे जाना है, राइट। तो जैसे फिजिकली वी हैव अ पिन कोड एंड वी हैव एन एड्रेस, दैट इज मोर लाइक एन आइडेंटिफायर ऑफ योर लोकेशन, कि ये पर्टिकुलर कंट्री में, या ये ऑन दिस पर्टिकुलर सिटी, वेयर इज दिस पर्सन लोकेटेड एग्जैक्टली, वी हैव अ यूनिक एड्रेस, राइट। सो इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट एज वेल, जो इंटरनेट की दुनिया है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। बहुत सारे डिवाइसेस पैरेलली एक साथ इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दिस डिफरेंट endpoints, or you can say devices? So every device has a unique IP address, right? IP stands for इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जिस भी डिवाइस से आप कनेक्टेड होंगे, उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा at any given point of time. If you have a phone or if you have another device that is using the internet, you have a laptop, सबका एक यूनिक इंटरनेट एड्रेस होगा, राइट। एंड उसी एड्रेस से, जैसे लेटर पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये लेटर एग्जैक्टली किसके पास जाएगा, सिमिलरली बिकॉज यू हैव एन आईपी एड्रेस, सो यू आर एबल टू मेक दिस रिक्वेस्ट। ठीक है, कि इस एड्रेस से मुझे ये पर्टिकुलर चीजें चाहिए, जो सर्वर आपको भेजता है, राइट। सो द सर्वर इज एबल टू send you this. Now, how do I check my IP address? So you can just go to this website called ip.me. You can go to this website called ip.me, and I'll just refresh. ठीक है, and you will get your current public IP address. So this is my IP address, and it reveals more information about yourself as well, right? कि what is my exact location, latitude, longitude, मेरा country का code क्या है, what is my city currently, right? And I am sitting in the upgrade office, so maybe the provider is Tata Teleservices, जो ऑफिस वाईफाई है, राइट। सो इट रिवील्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एज वेल। नाउ क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक आईपी एड्रेस विल स्पीक अबाउट वीपीएन एज वेल? कैन वी से दैट वन आईपी एड्रेस इज टाइड टू वन डिवाइस, और वो हमेशा सेम रहता है? क्या ये बोलना सही होगा कि एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस फिक्स्ड है और वो चेंज नहीं होता? कैन वी से दैट? कैन वी से दैट? नो, राइट? No, because who provides me this IP address? The IP address is coming from my internet service provider, है ना। अभी अभी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा, मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टाटा टेली सर्विसेज है, क्योंकि मैं उस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। Now, if I go home and I connect to my Airtel Wi-Fi, my ISP changes, right? My internet service provider changes, तो मेरा IP एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, राइट। सो एक डिवाइस के लिए क्या आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है? यस, हो सकता है। बट किसी भी पॉइंट पे व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, so you will always be connected through some ISP, through one internet service provider, and that internet service provider will give you a unique address, right? तो ये सेम अभी किसी का भी आईपी नहीं होगा। प्लीज डू नॉट एनोटेट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, सो यू विल नॉट हैव दिस सेम आईपी एड्रेस एंड इट विल बी यूनिक। इट कैन कीप चेंजिंग बेस्ड ऑन, मैं कैफे में बैठा हूँ, मैं उनके वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो आई विल गेट अ न्यू आईपी एड्रेस। मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, इट विल गिव मी अनदर आईपी एड्रेस। इफ आई एम यूजिंग माई मोबाइल डेटा, इट विल गिव मी अनदर आईपी एड्रेस, बट यू विल हैव एन आईपी एड्रेस। You will have an IP address, right? And we can say that IP address kind of is the identifier on the internet कि exactly data कहाँ पे भेजना है और कहाँ से आना है। There are various ways to check this, right? आप फोन में भी check कर सकते हो। You will have your IP address section. So
नाउ वी नो कि इंटरनेट पे ऑन द रिसीवर साइड हाउ डज द फाइल रीच। मैं एग्जैक्टली जब यूट्यूब पे वीडियो प्ले करता हूँ या गूगल ड्राइव पे वीडियो प्ले करता हूँ, सो हाउ डज दैट फाइल नो कि एग्जैक्टली आना कहाँ पे है। सो देर इज एन आईपी एड्रेस, इट हैज टू रीच दैट पर्टिकुलर डिवाइस। द प्रॉब्लम इज एड्रेस सिर्फ एक तरफ से तो नहीं हो सकता। एड्रेस एक तरफ से नहीं हो सकता, एड्रेस दोनों साइड पे होगा, राइट? बिकॉज देर इज अ सोर्स एंड देर इज अ लोकेशन, देर इज अ डेस्टिनेशन, राइट? सो सर्वर जहां पे फाइल लोकेटेड है, क्या उसका भी एक एड्रेस होना चाहिए? यस और नो? शुड द सर्वर ऑल्सो हैव एन आईपी एड्रेस? Should the server also have an IP address? Yes, yes. So the server also has an address. So now things are slightly easy to understand. क्योंकि मुझे the data has to flow from the server to my device. The server has its own address. My device has its own IP address. क्योंकि दोनों के address है, so it has to move from 192.16.52.6 to something else from A to B, right? दोनों साइड क्योंकि एड्रेसेस है, so now source to destination, the data flow is possible, correct? Now the big question, तो अगर अगर इंटरनेट इतना ज्यादा आईपी एड्रेसेस पे डिपेंडेंट है, द इंटरनेट इज सो मच डिपेंडेंट ऑन दिस आईपी एड्रेस एंड ईच एंड एवरी सर्वर हैज एन आईपी एड्रेस, ओके, then when I'm accessing a file on Google Drive, आइडियली मुझे उस एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजनी है, मुझे उस एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजनी है। बट जब मैं ब्राउजर में जाता हूँ कोई फाइल एक्सेस करने के लिए, व्हेन आई गो टू द ब्राउजर टू एक्सेस अ फाइल, आई डोंट सर्च लाइक दिस 192.168। आप सर्वर का एड्रेस डालते हो क्या? जो भी फाइल आपको चाहिए उसका आप एड्रेस डालते हो क्या? नहीं, वी डोंट डू दैट, वी डोंट डू दैट, वी डोंट डू दैट। अगर ऐसा हमें करना होता तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इमेजिन, यू कैन रिलेट दिस विथ, अगर आपके फोन में कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन नहीं होता। इमेजिन, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ यू कुड नॉट, यू कैन कॉल पीपल बट यू कैन नॉट सेव कॉन्टैक्ट नेम्स। तो क्या करना होता? आपको सभी के नंबर्स याद करने होते, राइट? इफ आई हैव टू कॉल राहुल, आई हैव टू डायल राहुल्स नंबर एवरी सिंगल टाइम। बट हम ऐसा करते हैं क्या? हम ऐसा नहीं करते। हमने सारे के सारे फोन नंबर्स हमारे कॉन्टैक्ट बुक में सेव करके रखे हैं। ईच नेम इज मैप टू इट्स नंबर, सो वी डोंट हैव टू रिमेंबर द नंबर, वी जस्ट रिमेंबर द name, and name is automatically mapped to the person's contact number. In the case of internet, we don't have to remember the particular IP address, right? But we still have to search for the domain name, right? So I would have to search for YouTube, or I would have to search for Wikipedia, right? कोई ना कोई URL में सर्च करूंगा, कोई ना कोई डोमेन नेम में सर्च करूंगा, right? So मेरे लिए IP address is not something that I'm going to remember every time, but I have to still remember the domain, which is much easier, राइट? तो हमने चीजों को आसान कर दिया कि एवरी डोमेन को मैप कर दिया एक आईपी एड्रेस के साथ, राइट? एंड नाउ इट इज इजियर टू डू, राइट? एंड व्हाट इज दिस होल सिस्टम कॉल्ड? What is this particular system called? The system that maps domain to its IP address is DNS, correct? DNS, right? DNS. What is the full form of DNS? What is the full form of DNS? Anyone? What is the full form of DNS? Yes. Domain name system. Yes. Acts like our phone book, right? जैसे not data name system, Ritik. Domain name system. Okay. So you don't have to remember all these IP addresses now. You just need their domain names, right? And the DNS takes care of the rest. बाकी डीएनएस संभाल लेगा, आपको बस डोमेन नेम याद रखने हैं। डीएनएस में ऑलरेडी डोमेन नेम्स आर ऑलरेडी मैप्ड विद द आईपी एड्रेसेस। तो नाउ थिंग्स बिकम मच इजियर फॉर अस। तो जो भी फाइल मुझे एक्सेस करनी है, आई आइडियली नीड द डीएनएस, सॉरी, आई नीड द डोमेन नेम और आई नीड द यूआरएल, एंड दैट ऑटोमेटिकली फेचेज मी कि facebook.com पे जाना है तो देर इज अ डोमेन नेम, या फिर कि कहीं और जाना है तो देर इज अ डोमेन नेम, राइट?
Similar to the example I gave you of फोन बुक, कि मुझे अगर किसी का नंबर डायल करना है तो हम क्या करते हैं, राइट? वी हैव, ये अभी वर्चुअल है, राइट? दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, नाउ वी हैव इट ऑन आवर फोन्स, बट इंस्टेड ऑफ द पर्सन एंड इट्स कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ domain name and IP address. Domain name and IP address, right? This system, you can call it as DNS, right? So DNS has to take care of, yes, Atif, right? And things become much, much easier for us, correct? Things become much, much easier for us. Now, ऐसा हो सकता है कि सर, मैं जब YouTube, so this is a good example, right? When I search for youtube.com, so the DNS translates this particular, इसको आप DNS resolution भी बोलते हो, क्योंकि आपका URL resolve हो जाता है एक IP एड्रेस में. So you enter a URL, it gets resolved to an IP address, and एसेंशियली व्हाट आई एम डूइंग कि मेरा जो भी क्लाइंट सिस्टम है, जो भी मेरा लैपटॉप है, यहां से जब मैं youtube.com टाइप करता हूं तो आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू दिस एड्रेस 208, जो भी होगा आईपी एड्रेस, उसको मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, राइट? और उस रिक्वेस्ट, वो जब रिक्वेस्ट जाती है उस पर्टिकुलर, वो रिक्वेस्ट जब डेटा सेंटर के पास जाती है, सर्वर के पास जाती है, तो सर्वर गेट्स द रिक्वेस्ट एंड सर्वर को पता होता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली दैट आई हैव टू सेंड एज अ रिस्पॉन्स, राइट? सो द होल फ्लो इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल. हमारे क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट जाएगा, किसको? सर्वर को. और आप सर्वर आपको वापस क्या भेजेगा? रिस्पॉन्स भेजेगा, राइट? सर्वर आपको वापस क्या भेजेगा? रिस्पॉन्स भेजेगा. सो वी सेंड द रिक्वेस्ट एवरी टाइम यू हिट youtube.com इन द browser, a request is being made to that particular IP address, right? DNS resolves and makes a request to that IP address, and return में हमें क्या आता है? रिस्पॉन्स आता है. नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो रिस्पॉन्स आपको आता है, हाउ डज दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स ट्रेवल्स? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू, राइट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने ये केबल्स डिप्लॉय की है, AT&T, गूगल, जियो एंड बिग बिग कंपनीज लाइक दिस, राइट? दीज कंपनीज हैव ऑलरेडी लेड डाउन दिस केबल्स. और इसका एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, राइट? क्योंकि ये केबल्स, व्हेन यू आर लेइंग डाउन दिस केबल्स, ये कोई नॉर्मल केबल है नहीं, राइट? ये बस डाल दी. यू हैव टू एंश्योर दैट द केबल इज स्ट्रांग इनफ, द केबल डजंट ब्रेक, because if the cable breaks, internet is disrupted. Can you imagine? कैन यू इमेजिन? और ऐसा हुआ है, आपको पास में केसेस मिल जाएंगे कि एक, जब एक केबल, देखो, जब एक केबल डिस्कनेक्ट होती है, केबल डिस्टर्ब होती है, तो कुछ पार्ट ऑफ द नेटवर्क इज अफेक्टेड, नॉट द होल वर्ल्ड. सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट गेट अफेक्टेड, देयर वुड बी एन आउटेज, राइट? That would happen. So you have to ensure that these cables don't, wear and tear नहीं होना चाहिए, disrupt नहीं होना चाहिए, right? So there are these large ships that plow these cables under the ocean, right? So under the ocean, these fiber cables are actually physically put down, and they are thick. They are thick not because कि जो light pulses हमें send करने हैं, those require the cables to be thick, but you have to give sufficient protection to those particular optical fiber cables. नहीं तो क्या हो जाएगा? वो cables डिस्ट्रॉय हो सकती है, राइट? तो देर इज अ स्मॉल वीडियो, आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में भी मैंने ओपन रखा था. दिस इज अ स्मॉल वीडियो of a shark trying to attack this optical fiber cable which is under the sea. ठीक है, तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ. The reason why these cables have to be super super strong, इसीलिए मल्टीपल लेयर्स होती है उस केबल्स में, ताकि वो केबल डिस्ट्रॉय ना हो सके, राइट? सो देयर इज अ फैट केबल, राइट, एंड यू कैन सी अ शार्क इज अप्रोचिंग. दिस इज योर ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड द शार्क कैन ट्राई टू बाइट इट. इज वेरी पॉसिबल. ओशन में तो बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, यस और नो? So we don't want our cable to be destroyed. So this cable has to be super strong. It is under the ocean. Has to be super super strong. And इसीलिए जब आप ऑप्टिकल फाइबर केबल का स्ट्रक्चर देखोगे, जब आप ऑप्टिकल फाइबर केबल का स्ट्रक्चर देखोगे, राइट, यू विल सी देयर आर मल्टीपल लेयर्स, राइट? एंड यू कैन सी दिस, राइट, कि देयर इज एन आउटर जैकेट. इस आउटर जैकेट का कुछ टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, except for the protection that it has to provide, right? And even for this internet specific optical fiber cables, that coating is even larger, right, to ensure कि वो केबल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होनी चाहिए. वो केबल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होनी चाहिए, राइट? एंड
In the center, what you see is a small glass core, right? A glass core, jiske through your data signals have to travel through this particular glass core, right? Um, I'll tell you, Ankit. Coming to that, let me just finish it. Let me just finish. So, Ankit, all of these cables are interconnected, right? So there is a single network. There is a single network, right? And each device has its own IP address. Correct? Now we'll see how the data flows. How the data flows, we are going to see. क्योंकि जो फाइल हम डिवाइस पे चला रहे हैं, क्या वो इस केबल के थ्रू डज इट ट्रैवल एज अ सिंगल एंटिटी? डज इट ट्रैवल एज अ सिंगल एंटिटी? हाँ, किसी ने बोला था वायरलेस नेटवर्क का, राइट? समवन सेड व्हाट इफ आई एम यूजिंग अ फोन मोबाइल डेटा? तो वो टावर तक तो, टावर के बिना तो आप मुझे बताओ, टावर नहीं है तो मोबाइल डेटा यूज कर सकते हो क्या? नहीं, राइट? नहीं, राइट? सो द वायरलेस कम्युनिकेशन मोड इज योर सेल्यूलर टावर्स, जो है, राइट? बट टावर्स तक तो केबल्स ही है, यस और नो? यस और नो? तो टावर्स तक दीज केबल्स आर कनेक्टेड विद द टावर, और इसीलिए तो टावर इज सुपर इंपॉर्टेंट। आप कुछ ऐसे ऐसे जोन में जाते हो जहां पे फोन का नेटवर्क नहीं है। फोन का नेटवर्क क्यों नहीं है? क्योंकि उसके आसपास कोई टावर नहीं है। So the wireless connection that you are having, that is just from the tower till you, वो तो आपके आसपास के टावर से आप कनेक्टेड हो, राइट? बट यूएस से आपके पास वायरलेस सिग्नल नहीं आया है, राइट? इट हैज कम 99.99% ऑफ द डिस्टेंस वो ऑप्टिकल फाइबर केबल ने आपके लिए कवर कर दिया है, और जो लास्ट का कनेक्टिविटी है, दैट ओनली दैट मच पार्ट इज वायरलेस इन केस यू आर यूजिंग वाईफाई और सेल्यूलर डेटा नेटवर्क, राइट? तो वहां तक स्टिल द केबल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, अब हम थोड़ा लार्जर प्रॉब्लम को समझेंगे कि ये जो डेटा ट्रैवल करता है, ये इन केबल्स के थ्रू कैसे ट्रैवल कर सकता है। बिकॉज वी सेड दैट देर इज अ ग्लास कोर, राइट? एंड बिफोर वी गो दैट, अच्छा, देर शुड बी सम रेगुलेटरी बॉडी, there should be some regulatory body that ensures that the entire internet works smoothly. So, for example, let's take an example of stock market, right? Because in the past we have heard about a lot of scams, lot of irregularities that happen in the stock market, right? So, which is the body that regulates the stock market? किसी को पता है? Which is the body in India responsible for regulatory body responsible for stock market? SEBI. So some of you have rightly mentioned it is SEBI, right? So SEBI as an organization is responsible to ensure कि stock market में कोई भी scam नहीं हो रहा है, कोई भी irregularity नहीं हो रही है, and it works as it is expected to work. So there is a body to govern this, right? Similarly, for internet, there is a body which is called as ICANN. It stands for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. And mota mota, ठीक है, mota mota try to understand what is the internet. The internet is an interconnected network with a lot of एड्रेस पॉइंट, जो हम आईपी एड्रेसेस बोलते हैं ना, इन बहुत सारे डिवाइसेस है, तो बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस को डिफरेंट डिफरेंट जो हमने डोमेन नेम्स डिस्कस किए हैं, देयर आर मल्टीपल डोमेन नेम्स हैव different IP addresses, and all of this connected network, including the DNS, right? ICANN is the body who takes care of all of this. You can read further in detail if you want to. Okay, so ICANN is the functioning body, you can say. Now, a larger question, a larger question. सर, डेटा एग्जैक्टली कैसे आता है मेरे पास सर्वर से मेरे फोन तक? डेटा एग्जैक्टली कैसे आता है? इन विच फॉर्म नाउ? On your screen you can see 0 and 1s. So for all of you who are going to study computer science, you all should be knowing that computers don't understand what is an image, what is when I say something in English, I play a video. उसके लिए ये बहुत सारा जो चीजें हमें समझती है, जिस तरीके से चीजें हमें समझती हैं, कंप्यूटर्स को नहीं समझती। मशीन्स ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। एंड व्हाई बाइनरी? बिकॉज मशीन कैन अंडरस्टैंड इफ समथिंग इज ऑन और ऑफ। ठीक है, देर आर ओनली टू सिनेरियोज, 0 and 1, 0 and 1, right? Something is on, something is off. And when I take a combination of multiple zeros and ones, when I take a combination of multiple zeros and ones, I can represent any form of data. Any form of data can be represented
in zeros and ones, right? And it is also homework for you today. मैं आपको कुछ टास्क दूंगा at the end कि images 0 1 में कैसे कन्वर्ट कर होते हैं, वीडियोस कैसे होते हैं, इसको आपको एक्सप्लोर करना है. But for now you need to understand that data in any form can be represented in the form of zeros and ones. अच्छा, मान के चलते हैं zeros और ones है, but in which medium, in what form do they travel? In what form do they travel through the cables? ये जो केबल से जाती है तो किस फॉर्म में ट्रेवल होती है, राइट? किस फॉर्म में वो ट्रेवल होती है? आर दिस डिजिटल सिग्नल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? Which form of signals, right? Which form? So when you're saying waves, there are multiple types of waves, right? So this go in the form of, again, light pulses. Light pulses. Okay? Light pulses. Light pulses, they have to travel in the form of light pulses, right? Again, zeros and ones in the form of light pulses, and they eventually reach you, right? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर जो ग्लास कोर होता है उसके थ्रू देर आर लाइट पल्सेस दैट आर मूविंग. इन दी एंड जो आप बोल रहे हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या डिजिटल सिग्नल्स, वो डिजिटल सिग्नल्स एट द एंड कन्वर्ट होते हैं. वो एट द एंड कन्वर्ट होते हैं, बट दे डोंट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, राइट? दे स्टिल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस. Now there is one more question that I have. There's one more question that I have, right? If they travel in the form of light pulses, if they travel in the form of light pulses, then what is their speed? Then what is their speed, right? As a alternating form में, these yellow lines are representing the light pulses. These yellow lines are representing the light pulses, right? So there are light pulses that are moving inside this particular glass core. So what is going to be the speed of transmission? If they are traveling in the form of light pulses, then what is going to be the speed? क्या होने वाली है speed? What is going to be the speed? Right? So a lot of you are saying speed of light. Speed of light. Essentially it should be true. Light pulses है तो light की speed पे travel करेंगे, ठीक है. Light की speed क्या होती है? What is the speed of light? What is the speed of light? In kilometers per second में बताओ. किलोमीटर पर सेकंड में बताओ. What is the speed of light? किलोमीटर्स पर सेकंड में बताओ मुझे, क्योंकि that is what we will understand better. Tell me how many kilometers per second? How many kilometers per second? I want one finite answer, क्योंकि ये तो फिक्स है. Don't tell me 3 into something. Just tell me how many kilometers per second. How many kilometers per second? 3 lakh kilometers per second, right? 3 lakh kilometers per second. एक बार सोच के देखो. एक बार सोच के देखो. Isn't it more than enough? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब बिफोर यू ब्लिंक आपके पास डेटा पहुंच जाएगा. मोर देन सफिशिएंट. बट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आ रहा है तो मुझे कभी डिले महसूस नहीं होगा. इट विल बी वेरी फास्ट. बट द प्रॉब्लम इज देर इज एन अजम्पशन. हम जब बोल रहे हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. यस और नो? दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. और इवन एयर का भी ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट? मीडियम भी तो इंपॉर्टेंट है. किसमें ट्रैवल कर रहे हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना. किसमें ट्रैवल कर रहे हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना. तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जब हम बोलते हैं, सो वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज ट्रैवलिंग थ्रू वैक्यूम, राइट? बट मीडियम चेंज होगा तो स्पीड स्लो हो सकती है, राइट? एंड एवरी मीडियम हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, एवरी मीडियम हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो हम एक बार पूछते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कितना होता है? What is the refractive index of vacuum? It is 1, if I'm not wrong, correct? It is exactly 1, right? So that is why you are able to get it at 3 lakh kilometers per second. Okay. What is the refractive index of air? तो 3 divided by 1 करूंगा तो 3 ही आएगा. 3 divided by 1 is 3. What is the refractive index of air? 1.003, which is almost 1. Which is almost 1. तो अगर आप 3 डिवाइड बाय 1.003 करोगे, इट विल स्टिल बी क्लोज 2.999 समथिंग आएगा, राइट? एग्जैक्टली 3 लाख किलोमीटर नहीं आएगा, बट थोड़ा सा कम आएगा, बट स्टिल क्लोजर टू 3, राइट? तो देख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर.
एग्जैक्ट थ्री नहीं आएगा, ऐसा कुछ आएगा ना, ऐसा कुछ आएगा, ये देखो 2,99,000, लग मान के चलो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही है, थोड़ा सा कम है, बट इवन इन एयर इट इज फाइन, राइट। बट हमारे लाइट पल्सेस किसके थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं? नीदर एयर नॉर वैक्यूम, neither air nor vacuum. They are traveling from this glass core of optical fiber cable. They are traveling through this glass core of optical fiber cable, right? Glass. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ऑप्टिकल फाइबर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? अब इस ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है समवॉट 1.4 टू 1.46 के आसपास। कैलकुलेशन के लिए आप 1.5 ले लो, कैलकुलेशन के लिए आप 1.5 ले लो, यस। टेक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। नाउ व्हाट इज 3 डिवाइडेड बाय 1.5? व्हाट इज 3 डिवाइडेड बाय 1.5? 2 आएगा, राइट। 3 डिवाइड बाय 1.5 पूरा कितना आएगा? 2 आएगा। स्टिल इट इज फाइन। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू my light pulses can travel at 2 lakh kilometer per second, which is excellent, which I have no problem with, बहुत ही बढ़िया है, राइट। सो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल होती है चीजें और आप तक पहुंचती है, इसीलिए बिफोर यू ब्लिंक द डेटा ऑलरेडी रीचेस यू, the data already reaches you, right? And now what you need to understand कि ये जब आपको पहुंचता है, right, you have devices like the router, ठीक है, you have devices like the router. um, किसी ने modem का नाम सुना है? Anyone has heard about the modem? Anyone has heard about a modem, right? Yeah. So a modem or a similar kind of device is very, very important. Modem or a similar kind of device is very, very important, राइट। बिकॉज बिकॉज आपको ये लाइट पल्सेस आपके डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने हैं। सम डिवाइस हैज टू कन्वर्ट दिस लाइट पल्सेस बैक इनटू डिजिटल सिग्नल्स, करेक्ट। सो वी हैव डिवाइसेस डूइंग दैट। अच्छा, हैव यू एवर थॉट हैव यू एवर थॉट कि ये जो पल्सेस आप तक पहुंच रही है थ्रू अ केबल, थ्रू इंटरनेट दैट यू आर यूजिंग, ये जो पल्सेस आप तक पहुंच रही है, राइट, how much data are they carrying at one time? How much data are they carrying at one time? How does it travel? तो क्या 1 GB की फाइल एक साथ ट्रैवल हो रही होती है? क्या एक एक साथ ट्रैवल हो रही होती है 1 GB की फाइल? क्या एक साथ 1 GB की फाइल ट्रैवल हो रही होती है? नो, नो। So data travels in the form of packets. Yes, small packets, correct. So data travels in the form of small packets, correct. So there are small packets of data that are flowing. ठीक है। अच्छा, अब पैकेट कितना छोटा होता है रफली? देखो, पैकेट will also be carrying some data, right? Approximately how much data does a packet carry? How much data does a packet carry? ज्यादा से ज्यादा कितना ही होगा? कितना होगा रफली? टेक अ गेस, right? So if I'm not wrong, it is around 1500 bytes. Okay, it is approx 1500 bytes, ठीक है। one packet one packet of data, one packet of data, ठीक है। तो यहाँ पे देखा होगा टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 1500 बाइट। हाउ मच इज 1500 बाइट्स? वन पैकेट ऑफ डेटा 1500 बाइट, ये बहुत ज्यादा डेटा होता है क्या? 1500 बाइट्स मतलब बहुत ज्यादा डेटा होता है क्या? 1500 बाइट्स कुछ भी नहीं है। 1500 बाइट्स में तो 1.5 KB, एग्जैक्टली 1.5 KB में कुछ भी नहीं आएगा। इफ यू ओपन इमेज ऑन योर फोन, आपके फोन में एक इमेज होगी, वो भी 4-5 MB की होगी, राइट? वो भी 4-5 MB की होगी, यस और नो? तो 1.5 KB इज नथिंग। मतलब इवन फॉर अ स्मॉल इमेज, एक छोटी सी इमेज भी होगी, 4-5 MB की फाइल होगी, तो उसको भी देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पैकेट्स दैट विल हैव टू ट्रैवल। इवन फॉर अ स्मॉल फाइल 5 MB, हम तो कोई भी फाइल आप व्हाट्सएप पे भेजोगे तो 5 MB की से नीचे होती भी नहीं है, राइट? तो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। हम तो जीबीस की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े फाइल्स की बात कर रहे हैं, राइट? बट इवन फॉर स्मॉल फाइल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पैकेट्स दैट हैव टू ट्रैवल।
राइट? ये सारे पैकेट्स ट्रैवल करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स ट्रैवल करते हैं ऑफ डेटा, right? And small packets of data are traveling. I have a question now. I have a question. If all of these packets are flowing, छोटे छोटे पैकेट्स फ्लो होते हैं, तो आई कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, राइट? मेरे पास एक बड़ी फाइल है, उस बड़ी फाइल को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया इन स्मॉल पैकेट्स, राइट? एंड ऑल ऑफ दीज पैकेट्स आर ट्रैवलिंग एंड दे रीच एट द एंड. अच्छा, इमेजिन जिक्सॉ पजल. हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड विद अ पजल, जिक्सॉ पजल, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी पीसेस होती हैं? यस, हैव यू ट्राइड टू प्ले विद अ जिक्सॉ पजल? यस, ठीक है. अब मान के चलो कि ये छोटे छोटे पैकेट जो है वो उस पजल का पार्ट है, राइट? एंड व्हेन यू पुट द होल पजल टुगेदर, देन यू गेट द एक्चुअल फाइल, देन यू गेट द एक्चुअल इमेज, करेक्ट? तो रिसीवर के पास, व्हेन आई एम द एंड यूजर, इफ ऑल ऑफ दिस डिफरेंट पैकेट्स कम टुगेदर, राइट, हाउ विल दे इवेंचुअली कन्वर्ट टू द होल फाइल? किसी को पता ही नहीं है, रैंडमली सब पैकेट्स आ गए हैं. हाउ डू those पैकेट्स असेंबल अगेन? How do those packets assemble again? So these packets are carrying a lot of information along with them. These packets are carrying a lot of information with them, and few of the things, right? Few of the things, एक तो वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, सर्वर का आईपी एड्रेस, ठीक है? कहाँ उसको पहुंचना है, राइट? द पैकेट्स नीड टू नो कौन से आईपी पे उसको जाना है, द आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर, आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस नंबर. हर पैकेट को पता होना चाहिए कि मैं इस फाइल का कौन सा सीक्वेंस नंबर है, बिकॉज इफ देर आर 100 पैकेट्स, देर आर 100 पैकेट्स, एंड ऑल ऑफ देम हैव अ यूनिक सीक्वेंस नंबर, राइट? तो आई कैन पुट देम टुगेदर. हाउ? one packet has a sequence number 1, 2, 3, then 4, then 5, then 6. I can put them together. तो 100 पैकेट्स, क्योंकि सबका एक एक सीक्वेंस नंबर है, तो मुझे पता है कि पहले विच इज द फर्स्ट पैकेट, विच इज द सेकंड, which is the third, which is the fourth, and eventually I get my original file that was needed. Right? It's much more complicated than that, but each packet has a sequence number. Sequence number से पता चलेगा कि first packet कौन सा है, second packet कौन सा है, और last packet कौन सा है, and how can I view it as a single file. ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है in understanding the internet, and these small packets travel along with a lot of information, and there are multiple paths in the internet from going from point A to point B. They can prefer whichever path they want to take, but it has to reach the destination address जो उनके पास है, right? And once that data reaches to the closest cellular tower, और अगर मैं मोबाइल डेटा से हूँ तो through the cellular tower, because there is a SIM card in my phone, there can be a wireless connection that is established, and we are able to do it. Now, जो पोस्टल नेटवर्क हमारा होता है, जो पोस्टल नेटवर्क हमारा होता है, राइट, दैट वर्क सीमलेसली, राइट? कोई भी लेटर, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ द पोस्टल नेटवर्क, कोई भी लेटर है जो उसके करेक्ट घर में वो पहुंच जाता है, उसके वो करेक्ट घर में पहुंच जाते हैं. क्यों? व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन इफ, व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट राइट द एड्रेस? व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट राइट द एड्रेस ऑन द लेटर? क्या वो सही घर तक पहुंच पाएगा? व्हाट इफ आई डोंट राइट एड्रेस on the letter? No, the postal network will not accept your letter in the first go, है ना? वो लेटर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उस पे पिन कोड नहीं लिखा है, आपने उसमें करेक्ट एड्रेस नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखा है. दैट मीन्स देर आर सर्टन रूल्स, दैट मीन्स देर आर सर्टन रूल्स दैट वी फॉलो इन द पोस्टल नेटवर्क. एंड सिमिलरली इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, जैसे पोस्टल नेटवर्क स्मूथ इंश्योर होने के लिए, स्मूथ चलने के लिए, उसके कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. सिमिलरली in the case of internet, right, for the smooth functioning of an internet, there are certain protocols that we follow, जो आज के सेशन में हम पढ़ने नहीं वाले, बट आपको पता होना चाहिए ये चीज कि इंटरनेट इतना सीमलेसली काम इसलिए करता है बिकॉज फॉर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स, फॉर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ, नॉट फाइल्स पर्टिकुलरली, बट डिफरेंट डिफरेंट थिंग. जैसे आप एग्जांपल ले लो वेब. So for web access, there is a HTTP, HTTPS protocol, right? अगर वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है या वॉइस कॉल हो रहा है, right? Different forms of data follow certain protocols and rules. Email send करना है, email sending will have its own kind of protocol. When you're making a video call will have its own kind of protocol. If it is a voice call,
voice call will have some protocol, right? And because the whole internet is working on certain protocols. These protocols are rules, basically rules of the internet, रूल्स ऑफ द इंटरनेट। और क्योंकि ये रूल्स फॉलो हो रही हैं, इसीलिए इंटरनेट स्मूथली चल रहा है। एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज डिफरेंट रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स दैट वी have in a subject called computer networks, right? So at Upgrad School of Technology, we will have a course. We'll have a course on कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हम नेटवर्किंग के बारे में, हम प्रोटोकॉल्स के बारे में और डिटेल में सीखेंगे। बट फॉर नाउ आई वांट यू टू नो कि प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर एक चीज के लिए रूल्स होते हैं, और उस रूल्स को फॉलो क्योंकि हम कर रहे हैं, द इंटरनेट इज एबल टू वर्क स्मूथली। ठीक है। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा था अबाउट वीपीएन। Someone had asked a question about VPN. In fact, one popular discussion that is happening around the internet is टेलीग्राम बैन हो गया। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ ट्विटर एक्स वगैरह पे लिख रहे हैं कि मेरा तो फिर भी चल रहा है, right? A lot of people are writing on social media कि Twitter, X, whatever is not Twitter, Telegram is banned, right? Telegram is banned, but I'm still able to use it. And why was Telegram banned? Because of the whole NEET exam issue, correct? Are you guys aware about that? Are you guys aware about the whole NEET examination issue? Yes, उसकी वजह से टेलीग्राम बैन हो गया, राइट? तो इंटरनेट पे बहुत बहुत लोग लिख रहे हैं कि टेलीग्राम बैन हो गया, बट मेरा फिर भी चल रहा है क्योंकि मैं एक वीपीएन यूज कर रहा हूँ। मेरा फिर भी चल रहा है क्योंकि मैं एक वीपीएन यूज कर रहा हूँ, राइट? सो आप नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कम इट हैपेंस दैट देर आर मल्टीपल users on the internet, but how are you able to block Telegram for a particular country, right? For a particular country, yes, virtual private network, but how are you able to do it? Because I can say that all the IP addresses of India, all the IP addresses of India will no longer be able to access this particular server. Example, all the IP addresses of India are banned for this server. तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करूंगा ही नहीं। आई विल यूज द इंटरनेट विदाउट इंडियाज आईपी एड्रेस। तो अब आप बोल रहे हो कि टिकटॉक इज बैंड इन इंडिया, दैट मीन्स आई कैन नॉट यूज एनी इंडियन आईपी एड्रेस टू एक्सेस टिकटॉक, बट मैं यूएस का आईपी एड्रेस यूज कर लेता हूँ, राइट? सो दैट इज इन शॉर्ट, VPN basically provides you a temporary, fake बोलना, I don't know if fake is the right word, but it provides you a virtual temporary IP address जो किसी और कंट्री का है। So I might use a VPN and for the internet I can use the IP address of USA। तो इंटरनेट को ऐसे लगेगा कि मैं एक यूएस रेसिडेंट हूँ। The client that is using this internet is from USA and not from the internet, right? It's possible. There are providers, Deepak. There are VPN providers, right? So you can use VPN. There are a lot of these things। क्योंकि किसी ने पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता है, no worries, no worries, this session was not about VPN, but for those of you who know about VPN, there are different service providers that offer you this service of changing your IP address to some other country, and you can do that, right? ठीक है। All right. Cool. I think mota mota, this was just an understanding of this session was more around an understanding of how the whole internet works. Okay, the role of optical fiber cables, the role of IP address, the role of data centers and servers, and understanding ki boss, the internet is actually just a connected network of cables. This is not somewhere in the air. This is not in imagination. Okay, it is a connected network of cables, and वो cables के through our devices are connected either through your router, either through the cellular tower, और इसलिए हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वायर्स समुंदर के नीचे ये केबल्स है, इसलिए हम उसको यूज कर पा रहे हैं। एंड डेटा कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है, क्योंकि एवरी डिवाइस हैज एन आईपी एड्रेस। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस है, तो ए से बी चीजें मूव कर सकती हैं, right, through this optical fiber cables।
So just a quick understanding of that. You would also be having another session. I would be taking another session on what is the next session? Anyone? Let me ask you guys. Next session का title क्या है? किसी ने देखा है? Next session का title क्या है? किसी ने देखा है? Yes? Yes, introduction to generative AI. So next session is going to be even more exciting because in that particular session, I am going to give you a brief around prompt engineering. I'm going to give you a brief around different generative AI tools. I'll also show you how you can create your first website or application or game. You can create your first game. Um right? We'll give a quick what's about loop engine. Yes. So hold on for the second session. Okay, hold on for the second session. We'll be discussing a lot of tools, but मैं आपको थोड़ा सा sneak peek दे रहा हूँ कि you will be able to create by the end of second session. आप AI को use करके अपने games deploy कर पाओगे जो कोई भी खेल सकता है. You'll be able to create your own game, your own website, your own web application. Correct. So what are you going to do after today's session? There are two things जो आपको करनी है. दो चीजें आपको करनी है. One, you have to understand the whole binary system, how any form of data is converted to binary. तो images binary में कैसे कन्वर्ट होती है, जीरो वंस में कैसे कन्वर्ट होती है, वीडियो जीरो वंस में कैसे कन्वर्ट होती है, कोई भी डेटा जीरो वंस में कैसे कन्वर्ट होता है, इस पे आपको रिसर्च करनी है. यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट. दैट्स योर फर्स्ट होमवर्क. सेकेंड होमवर्क जो हमने लास्ट में डिस्कस किया कि इंटरनेट इज वर्किंग बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल्स, राइट? तो कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, अभी हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो किस चीज के लिए यूज होता है, राइट? सो नेम ऑफ द प्रोटोकॉल एंड द पर्पस ऑफ दैट प्रोटोकॉल, एक छोटा सा टेबल बना लो. एक छोटा सा टेबल बना लो अपनी बुक में और लिख लो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट आर बीइंग यूज्ड by the internet and उनका पर्पस क्या है. So these are the two things. One, understanding how data is represented in binary, and second, what are the different forms of protocols. तो ये दो चीजें आपको करनी है. और अगले सेशन में आना है आपको. अगले सेशन में we'll have a lot of fun. Cool. You can post about today's session on LinkedIn as well, and for those of you who want to connect with me on LinkedIn, I'll be sharing my LinkedIn ID as well. आप लोग कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है. Thank you so much, Ritik. Thank you so much, guys, for joining in. I will connect with you guys once again in the next session, and हम लोग पढ़ते रहेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें. ठीक है. Thank you so much, Rohan. Thank you, Lucky. Hope you really enjoyed the session. Thank you, thank you, Lakshay. Thank you. It was a pleasure. It was a pleasure. Shubham, if you have any more doubts, keep it reserved. I will be there at Upgrad School of Technology full time. आपको कोई भी चीज में डाउट है, we can discuss and we can connect. Right? Do not worry. Do not worry. Okay. Okay. You can also ping me on LinkedIn as well. Yes, Lakshay. Yes. Okay. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Cool. Bye, guys, and see you in the next one. Take care and all the best. Thank you, Ritik. Bye bye. Bye bye. हेलो हेलो भाई माइक ऑन कर लो. न्यूज़ लेटर्स पढ़ लिए सबने? ओके, चलो ठीक है फिर तो क्विज कंपटीशन ही करते हैं फिर.